Guys, this guy has reacted to my, has commented on my video, saying that he's an ex-TCS employee, and his question is, if you are not agreeing with the bond terms and conditions, then why you signed the bond and accepted the offer letter from TCS. So here's the thing. Just because TCS gave me this kind of an offer, exploratory offer, that becomes illegal right there. So they started on the wrong foot, and this is exactly what is illegal. So please understand that this is illegal thing on the part of TCS, Tata Consultancy Services, which is obviously controlled by Ratan Tata, and that's why I made him, I made the video. सेकंड वन इस पे एफआईआर करो भाई, इस पे ये भी समझे कि इस तरह पॉलिसी खुद सर रतन ने बनाई थी कि पहला जो है इमोशनल रिस्पॉन्स, आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बट इस पे ये भी समझाया कि इस तरह पॉलिसी खुद सर रतन टाटा ने बनाई थी. देखिए गाइस, यू गाइस आर इन इंडिया, बेसिकली देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस ऑफ योर ओन राइट्स, एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑल अबाउट. आई वांट टू मेक श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड योर राइट्स. And so your right is, you need to understand that when Ratan Tata employs people who make these policies, then that is something that you need to understand, that is also not good, and and the onus lies on him, the burden lies on him. So this is something that he should have not done, and he should have not let that happen. And by the way, definitely he was in connivance, he knew what's going on, and they don't care. That's how it works, राइट. हाँ, ये आप जबरदस्ती घर से लाया था टीसीएस ज्वाइन करवाने. सी, एक रॉन्ग है, वेदर मुझे जबरदस्ती लाए, जो मैं खुद किया हो. आपने बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात की है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि वो रॉन्ग है. जब उन्होंने एक प्रेजेंट करना, एक इस तरह का बॉन्ड साइन करना, एक ऐसे बंदों को प्रेजेंट करना जो बंदे उनसे साइन कराना, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, दिस काइंड ऑफ सिस्टम, दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इज रॉन्ग, एंड दैट्स वेयर आई वुड से कि रतन टाटा वाज आल्सो एट एरर. गर्व है, ये कोई बात नहीं, गर्व की मतलब ठीक है. आई डोंट वांट टू गिव, दिस इज नॉट, दिस जस्ट एन ओपिनियन, आई डोंट वांट टू आंसर दैट. No, after the person is dead and gone, he's stabbing him in the back. No, it's not like I'm stabbing him in the back. There's no such thing, that there is no back now. You just said that he's dead now. There's no back. I'm not doing anything behind his back. But anyway, he's dead. That has, see, basically now the topic has come up. People are talking about it, so I need to talk too. And people are, making him, look like a saint. But I want to just spread the awareness that he's not a saint. Ratan Tata is not a saint. What's the proof of your story? No tax is paid because profit is divided after. I didn't understand what it said after PAT. So, but the proof of my story. You should talk to anybody who worked in TCS in the early 2000s. They all used to sign bonds, and it is a common knowledge. So it's a common knowledge, and it's not something that I concocted. You can ask people, and then you will know, right? Um, huh. This is an emotional response. There is nothing to explain. Please explain how much social work you've done, how much you contribute within your limit. Remember, all human beings are selfish. All human beings are selfish, but they're not supposed to do illegal things. There's a difference between being selfish and doing illegal things. See, this is where our Indian youth is misguided. You need to understand that. You need to stand up for your rights. You need to know what's wrong and what's right. I being selfish or you being selfish is not wrong. But you doing illegal activity and I doing illegal activities is wrong. And Ratan Tata did illegal activity, and that's where I have issues, right? How much social work whether I have done any social work or not doesn't mean that I should be allowed to fall victim to an illegal activity. देखिए, बिल्कुल सिंपल मामला है. मैंने कोई गलत किया कि नहीं किया, मैंने कोई अच्छा किया कि नहीं किया, वो नहीं बात हो रही. रतन टाटा ने मेरे साथ एक इलीगल एक्टिविटी की हुई है, और मैं सबके बीच में बता रहा हूँ कि ऐसे हुआ है. ये बिल्कुल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, right? And doesn't matter the fact that have not contributed much to Indian society. I don't know. I don't want to measure that. I have, in my opinion, I created 40 jobs when I could. But at the end of the day, my point is that the fact that I didn't do that, it doesn't mean that I need to be exploited. That doesn't mean that, and doesn't mean that a person who exploited me is legal. He's done illegal activities, and he in my mind he should be, he should be given due credit for that. He should be, basically, people should know about his truth, right?
When it was live video was really I do post a number of videos, but yeah, you're right. I didn't post Ratan Tata's video specifically since he was in news, and it came to my mind that there is something that I know that nobody knows, and I need to talk about it. I don't think it is too impertinent. This is pretty apt for the situation. We are all talking about him, so I talked about him the way I have felt about him all my life. I understand. No, I was selected in TCS and management and told you that I worked in TCS for 3 years. So I did. गलत ही गलत है. No, it's not गलत ही गलत है. I don't know. So one of my friend was telling this. See, there is this guy. He says that yes, he just 3 years back also they used to have they have people employees sign bonds. So look, they have been asking people to sign bonds. This is wrong. This is too wrong. He says it's in Tata Mining. So it looks like it is going on, right? Right, so go guys, work on it. Make sure you guys stand up for your rights. There is nobody should be asking you to sign a bond or whatsoever. This is exploitative. This is wrong. We are living in 24, this is 2024. We are not living in 21st century, but not just that, we are living in pre 21st century. ठीक ठाक निकल चुकी है, बीच राइट इन द मिडल है. तो मेरे ख्याल से हमें अब ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करनी चाहिए. एंड टीसीएस की सारी जो पॉलिसीज हैं, सारे जो उनके रूल्स हैं, बड़े एक्सप्लॉइटेटिव हैं. यू गाइस शुड नो दैट. एंड रतन टाटा इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. हाँ, हाँ, मेरे को नजर आती थी डार्क साइड, बट एज आई सेड मैनी टाइम्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ, देयर वाज नो रीजन फॉर मी टू टॉक अबाउट इट. सो अभी एक बातचीत चल रही थी तो मैंने भी निकाल दिया. हाँ, and they never complain. You never know. They may be like you who don't believe, who may believe that this is nothing wrong has happened to them, nothing wrong has been done to them. There's a possibility. That's one possibility. Second thing is they when you leave TCS under before the bond time expires, that's when TCS acts, and that's when TCS does something, and that's pretty wild. And Ratan Tata is directly responsible for all this. Yeah, you saying great. He's the greatest human being doesn't. That's your opinion, and that's I value it. But that doesn't mean that I have to have the same opinion. My experiences with Ratan Tata ji and with TCS are very different, and I stand for those experiences and I talk about those. So that's what I'm talking about here. नहीं, नॉट रियली. अगर मुझे करना हो तो पहले भी बथेरे बंदे गए हैं. तो यहाँ पे मेरा एक स्पेशल अंदर था कि टीसीएस ने काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव डील्स करते हैं, एंड टीसीएस के कारण काफ़ी मेरा नुकसान भी हुआ. मेरी ईयर्स ऑफ माई लॉट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ माई लाइफ गॉट वेस्टेड. दे हैड दिस थिंग दैट आई हैड टू वर्क फॉर 3 years with them. And so in my mind, as I said again, this is something that I've taken quite I've been a victim of this thing. So I raised my voice and I told everybody about it. बकवास वही बंद कीजिए. देश को आपने क्या दिया है? देखिए, मैंने देश को चाहे दिया कि नहीं दिया, इसको मतलब ये नहीं है जैसे आपने पत्नी देश को दिया कि नहीं दिया. बट आई वुड लाइक टू स्प्रेड द अवेयरनेस. इट्स योर लीगल राइट दैट नोबडी शुड एक्सप्लॉइट यू. So and people who exploit you are should be considered evil. And that's what I'm तो ये देश को मेरे देने से और आपके कुछ देने से नहीं यहाँ पे बात हो रही. यहाँ पे बात ये हो रही है कि कैसे रतन टाटा जी ने लोगों को एक्सप्लॉइट किया. यस. सो अनुराधा जी बिल्कुल सी कह रही है कि जनरली सब लोग ऐसे करते हैं. देयर पीपल डू सो मेनी थिंग्स एंड बिल्कुल ऐसे ही है. गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा सिर्फ पर्पस लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है और आप लोगों को जगाना है, आप लोगों को समझाना है कि कि आप अपने लिए करो कुछ. यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. आप रतन टाटा के पीछे भाग भाग के आपको कुछ नहीं बनने वाला. आप अपने हिसाब से अपने लिए जागो, अपने लिए कुछ करो. और मेरा सारा जो चैनल है इसी चीज़ों के बारे में कि आप कैसे अपनी लाइफ चीज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो. और अगर देश को ठीक करना उसके लिए भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं. उन चीज़ों से हम आगे जा सकते हैं. ये रतन टाटा और अंबानी अडानी बहुत सालों से ऐसे लोग बैठे हैं, या ये बैठे हैं या इसके जैसे बैठे हैं. तब देश का कुछ नहीं बना और आगे भी नहीं बनेगा. आगे भी नहीं बनेगा. देश ऐसे ही रहेगा. बिकॉज इनका हिडन एजेंडा है कि हम सबको गरीब रखें, हम सबको बेवकूफ़ रखें. जैसे आप लोग उनके अंधे भगत बने हुए हो, वैसे ही ये चाहते हैं ऐसे रहे. कभी आपको पता ही ना चले कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. 21st सेंचुरी में क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बिजनेस एथिक्स क्या होने चाहिए, एम्प्लॉय राइट्स क्या होने चाहिए. ये लोग इसकी अवेयरनेस फैलने ही नहीं देना चाहते.
एज ए सिटीजन आपकी क्या राइट्स हैं, आप सरकार से क्या मांगो क्या ना मांगो, ये उसकी अवेयरनेस फैलने नहीं देना चाहते। ये आप लोगों को इमोशनल रखना चाहते हैं, जैसे आप इमोशनल रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं बहुत सारे लोग, ऐसे ही इमोशनल रखना चाहते हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप यू कुड थिंक फॉर योर सेल्फ। ये दे डोंट वांट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ। ये चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसी सी चीज़ें करते रहें, हमेशा ऐसे ही सोचते रहें और इधर उधर की बातों में फंसे रहें, कभी भी लॉजिकली सोचना सकें कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इवन बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं